दोस्तों, आप लोगों का वेद IAS में स्वागत है। और आज हम आप लोगों से एक नई न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। यू हैव रिसेंटली heard the news of vice president election. After president election, there was a vice president election. We are going to tell you about the process, how this particular post of vice president is filled by the government. This particular news was in newspaper, and recently we have seen that the election of vice president has been happened. Therefore, UPSC or UPPCS, they may ask certain questions on the basis of this news. What is the post and why this particular post of vice president has been created in Indian Constitution? As we already know when we read the Constitution, we see that there is a post of Vice President of India under Article 63. What does Article 63 it says? Article 63 it denotes that there must be a Vice President for India. After that, Article 64, Vice President will be the ex officio Chairman of the Council of State. 65, Vice President will be act as President or to discharge his function during casual vacancies of the President. That means when the President is going to be absent, the Vice President is going to perform the duties and the task of the President. आगे इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, we will see when we study in detail. The post of Vice President is very important because he is not only the Vice President of India, but he is also the Chairman of Rajya Sabha. As we have seen in the news that 14th Vice President election have been happened. We have already read all these things in newspaper, and the source was the Hindu, or you may take Indian Express, Dainik Jagran, any newspaper. All the sources, all the things is same, that there was a election for Vice President. Source may be differ, news may be same. After that, Article 66 it says that the process and the procedure of election of a Vice President. How the Vice President is elected? Directly, indirectly, basically indirectly. But what is the procedure we are going to study in this particular topic? अभी तक तो हमने आपको 63 से 66 तक के आर्टिकल्स में समझाया क्या क्या 63, 64, 65 और 66 आर्टिकल कहता था। आगे के इसमें आर्टिकल में सिर्फ इलेक्शन से ही जरूरी नहीं है, आर्टिकल 69 तक ये पूरा डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? आर्टिकल 67 कहता है, इट सेज अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि ये कब तक रहेंगे। वी विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स इन डिटेल। पहले आप आर्टिकल समझ तो लें कि कितने कितने हैं, दैट उसके बाद फिर आर्टिकल आता है 68। व्हाट डज दिस आर्टिकल 68 सेज? आर्टिकल 68 इट सेज दैट टाइम टू होल्ड इलेक्शन to fix vacancy in the vice president post
and the term of office of a person elected to fulfill casual vacancies. That means how much of the time is going to be taken for this particular seat, that means vice president election. And if any person who is a vice president, he may die in any casualty, how this particular seat is going to be fulfilled. That means all there is a rule and regulation under the constitution. Whatever is going to be happened, whether it is in country or it is in administration, everyone is going to follow the constitution. Whether you are court or whether you are government, court is there to check and balance. After that, Article 69 says the oath and affirmation by the vice president. What is the oath? हम भारत के लोग, oath, शपथ. फिर Article 69, till Article 69 there is a things given in the constitution, and it says that there will be a vice president. That means we have till now read about the vice president under from Article 63 to Article 69. Okay, let's move further. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन आवर कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट. ठीक, ही इज द सेकंड सिटीजन आफ्टर प्रेसिडेंट. फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट and lady citizen his wife. If a lady become a president, like our president Draupadi Murmu, she has become a president, then she will be the first citizen of country. He is accorded a rank next to president. Who? That means vice president is given a post just next below the president. Just like the post of American vice president, this particular concept of vice president have been borrowed from American vice president. Like in America, we have seen that the vice president is just below president, and he has all the power and function going to be performed by the vice president of America when the American president will be ill or he is in holidays time. Like that, the president of India is also performing his function. Now we are going to study the election process of vice president. How this particular election process is going to be happened. What are the process we are adopting under the constitution. We already know that this particular post of vice president is not fulfilled directly. That means the election of this particular vice president is not directly. देखा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, दैट पर्टिकुलर इलेक्शन टेक्स प्लेस इनडायरेक्टली जस्ट लाइक प्रेसिडेंट. नाउ वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. व्हाट आर द प्रोसीजर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गोइंग टू बी फॉलोड फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. उसका प्रोसीजर क्या है, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अभी तक कितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए हैं और उनका कितना कितना वोट उनको मिला, उनके अपोजिट में कौन कौन खड़ा था और
सब ये सब आगे हम देखेंगे, वी विल सी आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्शन टॉपिक. We already know that the vice president, like the president of India, the vice president of India is also not elected directly. He also elect indirectly. He is elected by the member of electoral college consisting of the member of both house of the parliament. ठीक है. This electoral college who elect particular group of MPs who are in Lok Sabha and who are in Raj Sabha, that means member of the parliament, is different from the electoral college of the president. कैसे? We have already studied about the president, that who is going to take participate in the election of president. Here it is important because it is said that there is a lot of difference between the election process of president and vice president. Both are indirect election, but the process is totally different. Why different? Those person who have participated in president election, some of them do not participate in the election of the vice president. वो कौन कौन members हैं, we will look into this. This is very important because इसी का खेल क्वेश्चंस में होता है और कुछ नहीं है. जैसे in the election of the vice president, it consists of both elected and nominated member of the parliament. क्या हुआ? इलेक्टेड, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इलेक्टेड कौन? दोज पर्सन हु हैव बीन इलेक्टेड बाय सिटीजन. नॉमिनेटेड दोज पर्सन्स हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट को पावर है नॉमिनेट करने के लिए, राज्यसभा लोग के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नॉमिनेट करता है ना 12-13 लोगों को. तो जिन जिन लोगों को वो नॉमिनेट करता है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वही लोग जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट वाले में बताया था हमने कि वाई दे डू नॉट पार्टिसिपेट, बिकॉज पार्शियलिटी ना हो जाए. क्यों? क्योंकि दे हैव बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. हाँ, लेकिन वो रिमूवल में उसके जरूर पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये एक संविधान का ऐसा, जो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, दे हैव मेड दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी वेरी इफेक्टिव, कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए. ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया. दूसरा पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. दैट मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वी हैव सीन दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स टेक पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, बट इन द वाइस प्रेसिडेंट द स्टेट assemblies person do not take participate in this particular election. Why they do not take participate? वही क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ राज्य सभा, दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट. ही डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. आगे हम पढ़ेंगे कि आजकल राज्यसभा के होने या ना होने पर भी बहस चल रही है. सम ऑफ द पीपल दे आर सेइंग दैट राज्यसभा creates, sometime UPSC have asked this question. Rajya Sabha is, we are watching that the Rajya Sabha is creating hindrance between the working of the parliament
when they stopped the particular bill which was passed by the Lok Sabha. इसे विवादों का भी सदन कहते हैं इन हिंदी, कि ये हमेशा विवादित ही रहता है. हाँ, बट why did this particular house, upper house, was created by the maker of the constitution? This is a good question. हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे. पहले हमें ये प्रोसीजर देख लें कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन. दो बताया. पहला कि द indirect election, but nominated members do not participate, nominated member participate in the vice president, and they participate in the vice president. president में nominated participate नहीं करते हैं. कंफ्यूज मत होना, यही कंफ्यूजन है. और क्वेश्चन यूपीएससी इसी पे खेलता है कि क्या आप जानते हो, उसे पता है. जो नहीं जानते हो उसी पे क्वेश्चन वो पूछेगा और उसको आप कहोगे कि अरे ये तो मैंने छोड़ दिया था. यही होता है. और तो ये दो चीज़ें पता चल गई कि स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स इसमें दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. ऐसा क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज सेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. व्हाई डिड द पर्टिकुलर स्टेट legislative assembly members do not participate for the election of the vice president? It says that the president is the head of state and his power extend to both administration by the central as well as in state. But vice president is only a head of council of state. That means he is a Rajya Sabha, head of the Rajya Sabha. Vice president did not get its salaries, allowance में जब हम पढ़ेंगे, of the post of the vice president. He gets his salaries for the post of chairman of Rajya Sabha. समझ में आया? Only he act as president when president is absent.